Hello and welcome back to EduBridge IS. I am Vishal Singh and this is the 7th video in our historical dictionary series. Today I am bringing to you certain words associated with the rich oral storytelling tradition of India. Now you can consider storytelling not only as an important form of entertainment but as a living vehicle of culture. The stories we tell represent who we were, who we are, and who we want to be. They represent a generational link of continuity between our past, present and future. एक सेंस में आप ऐसा कह सकते हैं that they are essential components of our cultural identity. तो हम जो कहानियाँ बताते हैं ये हमारे cultural identity कार्ड की तरह होते हैं. Recently, the Prime Minister has also emphasized on the importance of traditional forms of storytelling. He has especially mentioned the recently revived art form of Urdu storytelling known as Qissa Goi. India has a very rich tradition of oral storytelling stretching across thousands of years. So let us dive right into these terms. Of course, all of these terms and concepts are going to be discussed in detail in our History Foundation course beginning on the 10th of September. आप इस कोर्स को हमारी वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. द फर्स्ट टर्म इज सूत. हु वर द सूत्स? दे वर वॉरियर बार्ड्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हु रोड चैरियट्स इनटू बैटल एंड रिकॉर्डेड द हीरोइक डीड्स ऑन द बैटल फील्ड. तो आप इनको एक वॉरियर पोएट की तरह कंसिडर कर सकते हैं. दे वर ऑल्सो वेल वर्स्ड इन पुरानिक स्टोरीज, डायनास्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स. तो ये पोएम्स तो लिखते ही थे, कंपाइल करते ही थे, साथ में दे ऑल्सो यूज टू मेमोराइज एंड रिसाइट द पुरानिक स्टोरीज, डायनास्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स. नेक्स्ट टर्म मागध. वेरी सिमिलर टू द सूट्स, these were professional storytellers who were associated with the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales. और ये claim करते थे that they were descended from the Sutas. Next term, Pauranikas. Who were they? They were professional storytellers whose main occupation was to narrate Puranic stories to the common masses. Now, from the Gupta period onwards, the society had become quite rigid and a number of restrictions had been placed upon education. Those belonging to the lower varnas and women were prohibited from education. साथ में they were prohibited from learning about the Vedas and reading Vedic texts. And therefore, the Purans were written in order to convey the moral ethos of the society among these groups. And who were the people who recited the Purans to the common masses? They were known as Puranikas. So these were professional storytellers. Alright. Next term is Bhat. Who were they? They were medieval bards in Rajasthan. इनका मेन फंक्शन होता था राजपूत रूलिंग डायनेस्टीज़ के जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, यानी कि उनकी एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स को ये मेंटेन करते थे. एंड दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीमेंटिंग द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ द रूलर्स. तो दे वुड क्रिएट द एंसेस्ट्रल ट्री ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी. उनके जितने भी ब्रांचेस हैं, उनके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, दे वुड बी ट्रेस्ड बैक टू द मिथिकल एज. एंड वहाँ से जो करंट रूलर है उसकी एंसेस्ट्री को ट्रेस किया जाएगा, सो दैट देयर मे बी नो डाउट अबाउट हिज पॉलिटिकल लेजिटिमेसी. अच्छा, these Bhats also played a very important role in resolving succession disputes. Suppose there are two claimants to the throne. Whose claim is going to be considered stronger? जिसका ancestry ज़्यादा strong है as determined by these ancestral records. And since they were in the custody of the Bhats, they could be easily manipulated as well. तो भाट जिसको चाहे उसको फेवर कर सकता था. Alright? अच्छा, now these were the Bhats who were serving the ruling class. कुछ भाट्स ऐसे भी थे जो कि lower sections of the society को serve करते थे. Now what you have to remember about the Rajput society is that it had become quite rigid when it came to Varna, and social mobility between the different Varnas was quite difficult. लेकिन these Bhats used to doctor the genealogical records of their patrons in such a manner that would allow them to climb the social ladder. Alright, so ये थे Bhats. Charan. Who were they?
They were a special class of bards in medieval Rajasthan who eulogized their patrons through ballad poetry known as Veer Gathas in Dingal. Dingal क्या है? It was a special dialect of Rajasthani which was used and kept alive only by the Charans. तो डिंगल एक ऐसी बोली है जो कि केवल चरन्स यूज़ करते थे अपनी वीर गाथास को लिखने के लिए. तो चरन को आप अगेन वॉरियर बार्ड की तरह कंसिडर कर सकते हैं. दे यूज टू अकम्पनी द राजपूत वॉरियर्स इनटू द बैटल फील्ड एंड इनके जितने भी हीरोइक एक्ट्स थे इनको ये मेमोरियलाइज करते थे इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, और इस पोइट्री को बोलते थे वीर गाथास. राइट. देन वी हैव द टर्म कथाकार. हु वर दे? They were wandering storytellers who communicated stories from great epics and ancient mythology through dance, song and music. तो एक जगह से दूसरी जगह तक ये ट्रैवल करते थे और अपनी स्टोरीज़ को डांस, सॉन्ग और म्यूज़िक के थ्रू मासेस में रिलेट करते थे. दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग वॉज द प्रिकर्सर ऑफ कथक, द फेमस डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया. देन we have दास्तान गोई और किस्सा गोई. It refers to a 13th century उर्दू oral storytelling art form. यहाँ पे दास्तान या किस्सा क्या होता था? This was the word used for story. अगर लंबी स्टोरी है तो दास्तान, और अगर छोटा सा किस्सा है, छोटा सा एनेक्डोट है, तो उसको किस्सा बोल दिया जाता था. Now the story was woven around a central figure taken either from mythology or from history. इसको एक हीरो की तरह डिपिक्ट किया जाता था एंड एक एग्जाम्पल की तरह प्रेजेंट किया जाता था, सो दैट हिज एक्शंस मे बी मिरर्ड बाई अदर्स. दस दीज दास्तान्स और किस्साज ऑल्सो एक्टेड एज टीचिंग टूल्स. इसमें दास्तान गोई में जो स्टोरी टेलर होता है ही इज़ नोन एज दास्तान गो और किस्सा गो. ऑल राइट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट names of different storytellers found in different periods of Indian history. I hope these are all clear and it is quite possible कि UPSC यहाँ से एक question frame करके आपको पूछ ले. All right, so that is it from me. I hope you found this video useful. I'll see you again with a new set of terms. Till then, good luck and Jai Hind.